Hello, my dear kids. Welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. Children, I am Vandana and we are doing maths of class 3. This is your book, children, and the name of your book is Joyful Mathematics. Today we are going to do chapter number 11, which is time. So let's start this chapter. Here you can see some faces, some clocks are in front of you. Write the time shown by the clock in words and figures. So we have to write down the time that is written here in clock. So it is 5 o'clock and 5. Similarly, do the rest questions. Now draw the hour hand and the minute hand and show the given time. So we have to show the given time. So it is 3:27. So 27 means the bigger will be here and the smaller will be here. Clear? Like this. Do the rest questions. Now you are very familiar with the dial of the clock. The dial of the clock is marked with numbers 1 to 12. At equal distance, there are two hands. The minute hand, the hour hand and the minute hand. The long hand is the minute hand. जो सबसे लंबी सुई होती है वो मिनट की होती है और जो स्मॉलर होती है वो आर की होती है, जो हमें आर बताती है. The shorter hand takes 1 hour to move from one number to the next number. So एक नंबर से दूसरे पे पहुंचना है तो शॉर्टर हैंड को पूरा 1 घंटा लगेगा मूव करने में, which means 60 minutes लगेंगे. While the longer hand goes once round the dial in 1 hour. अब ये जो longer hand है इसे पूरा एक चक्कर काटने में 1 hour लगता है. So 1 hour is equal to 60 minutes. Minute hand and hour hand. The long hand is the minute hand, the short hand is the hour hand. The hour hand takes 1 hour to move from one number to next number. आर एंड क्या करता है, एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाने में क्या करता है, इट टेक्स 1 hour. इट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ द क्लॉक इन 12 hours. वो 1 राउंड को 12 hours में कंप्लीट करता है. द मिनट हैंड मूव्स फास्ट. मिनट हैंड जल्दी चलता है. इट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ द क्लॉक इन 1 hour. ये क्या करता है, 1 राउंड जो क्लॉक का है वो पूरे 1 घंटे में कंप्लीट करता है. टाइम in minutes. Now here you can see there's a clock in front of you. This is the long hand, this is the short hand. The clock face has 12 equal units marked and these are called hours. Now when the hour hand moves from one number to another, जब ये hour hand है एक नंबर से दूसरे पे जाता है, it means 1 hour has passed. 1 घंटा बीत चुका है. The clock is also divided into 60 small units. 60 छोटे छोटे यूनिट्स में बटा हुआ है ये क्लॉक, जिसे हम मिनट्स कहते हैं. तो यहाँ 12 से 1 तक जाती है जब ये मिनट हैंड, तो 5 मिनट्स कंप्लीट हो जाते हैं. सो ये 60 मिनट इज इक्वल टू 1 hour. नाउ रीडिंग द टाइम. कैसे हमें टाइम को रीड करना है, ये यू कैन सी वी शुड नो द टेबल ऑफ 5. सो वी हैव टू रीड. जब भी हमारी जो बिगर वाली जो मिनट हैंड है वो अगर 1 पे है, सो इट इज 5 1 times 5. अगर 2 पे तो 5 2 times 10. अगर 3 पे तो 5 3 times 15. सिमिलरली हमें ये टेबल कहाँ तक पढ़नी है, 5 12 times which is 60. तो ऐसे ही हम टाइम को रीड करते हैं. Now here example is given. The hour hand is at little past 9. जो आर हैंड है वो कहाँ पे है, 9 पे. एंड द मिनट हैंड इज ऑन 2. मिनट हैंड 2 पे है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, 2 × 5 which is 10. सो 9 10. द टाइम इज 9 10. इसे हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, 10 minutes past 9. 10 मिनट बीत गए हैं 9 बज के. नाउ द नेक्स्ट क्लॉक यू कैन सी स्मॉलर इज एट 5 एंड बिगर इज एट 4. सो हम इसे पढ़ सकते हैं 4 × 5 which is 20. So it is read as 5:20. इसे हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं 20 minutes past 5. Next clock you can see smaller is at 11 and the bigger one is at 3. So हम इसे पढ़ सकते हैं 11:15. और
हम क्वार्टर पास्ट 11 भी पढ़ सकते हैं. क्वार्टर मीन्स 12 में से 3 तक एक क्वार्टर हो जाता है. तो क्वार्टर पास्ट 11. So now let's move on to exercise 11.1. So here we can see there is a clock made in front of us. We have to write down the time. So small कहाँ है? 8 पे. और जो big है वो 5 पे. तो 5 multiply 5 is 25. So the time is 8:25. इसे हम और कैसे लिख सकते हैं? 25 minutes बीत गए हैं तो past 8. 25 minutes past 8. So similarly do the rest questions, children. Now here in question number 2, you have to draw the hand to indicate the time and also write the time in box. तो हमें यहाँ पे क्या करना है? Hands को draw करना है here and indicate the time. क्या time हो रहा है वो भी बताना है. So first one में देखिए hand is already drawn. 20 minutes to 10 means आप इसे लिख सकते हो 9 और आप देख सकते हो कितना है 8. तो 5 multiply 8 which is 40. So it is 40.